Assalamu alaikum students. This is Naghman Hammed and this is third video of A-level Computer Science paper 3. Right, we'll again go through some past paper questions and these questions are from different topics, different from the ones we have already done in previous two videos. Right, so let's start. Let me share my screen. All right, now these questions are from security chapter that includes a topic regarding encryption and different types of encryption, ciphertext, cryptography, they are included. This question says, Ed wants to send a message securely before sending the message. Software encrypts it using a symmetric key. Describe what is meant by symmetric key encryption. Okay, encryption simply means converting plain text to ciphertext, right? So plain text is actually understandable, and when we convert it to ciphertext, actually we encrypt it, right? After encryption, when we want to convert the ciphertext back to plain text, we do decryption. So ये दोनों processes होते हैं, encryption and decryption. Okay? By encrypting something, actually that thing becomes, it doesn't become hidden, actually it becomes ununderstandable. ठीक है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स होते हैं, हमारी पिन कोड होता है, हमारे पासवर्ड होते हैं, हमारी की होती है, वो किसी को नजर नहीं आते, राइट? वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं। अब जैसे पासवर्ड टाइप करते हैं वहाँ पे डॉट्स या स्टार्स एस्टेरिक्स नजर आते हैं, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म है। तो हमारा जो सेंसिटिव डेटा है उसको हम वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट कर देता है। There are two types of encryption. One is symmetric, other is asymmetric. Right? Symmetric is a simple type of encryption in which single key is used. Okay, what happens? Actually, plain text is converted to ciphertext with the help of a key. Right? That key is sent along with the encrypted data, like ciphertext. आपने किसी को डेटा भेजना है, आपको डर है कि कोई बीच में उसको इंटरसेप्ट ना कर ले, आप उसको एनक्रिप्ट करके भेजेंगे। यूज अ की, सिंगल की, दैट विल बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट द डेटा। एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा उसको भेजेंगे, साथ वो की भी भेजेंगे, बिकॉज द सेम की विल बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा। ठीक है, अब अगर बीच में कोई उस डेटा को इंटरसेप्ट करता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में और साथ की भी इंटरसेप्ट हो जाती है, तो दिस बिकम्स वेरी इजी फॉर दैट पर्सन हु इज इंटरफेयरिंग, एक्चुअली जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो की अप्लाई करेगा और उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। So data can be easily accessible by any third person, which is not desirable. The symmetric key encryption actually works like this, right? There is some sort of security, but it is not that secure. State two drawbacks of using symmetric key encryption. ये जो अभी हमने डिस्कस किया, there is a single key used, and if somebody intercepts the data and also intercepts the key, it becomes vulnerable. ठीक है, वो डेटा को देख सकते हैं। What will be the second drawback? एक तो की से पता लग गया। Second is actually the process of encryption is very simple. It's not complex because one key which is used to encrypt the data, same key will be used to decrypt the data. तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसके पीछे जो एल्गोरिथम, जो मेथड यूज हो रहा है, that is less secure. This is another drawback. यानी ये हैकिंग जल्दी हो सकती है और इसको डिक्रिप्ट जल्दी किया जा सकता है, तो एक्चुअली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट of this question is the symmetric keys to be exchanged before message is sent. Okay, to exchange the key securely, the use of quantum cryptography is being considered. अब वो ये सोच रहे हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। State two possible benefits of using quantum cryptography. Cryptography has been a very important topic, a very significant one throughout the years, right? For many years, the specialists, IT people, they have been involved in developing some method of encrypting data so securely that it cannot be decrypted. अभी तो हमने सिमेट्रिक
का क्वेश्चन किया ना, जब एसिमेट्रिक करते हैं उसमें डबल की यूज होती है, वन इज पब्लिक की, द अदर इज प्राइवेट की। पब्लिक की आप पहले यूज करते हैं इनक्रिप्ट करने में, वो आप साथ भेजते हैं, बट पब्लिक की अलोन कैन नॉट डिक्रिप्ट द डेटा, राइट। और उसके साथ एक प्राइवेट की यूज होती है विच इज यूनिक फॉर एवरीवन। पब्लिक की तो सेम होती है, प्राइवेट की यूनिक होती है, उससे फिर वो डिक्रिप्ट होती है। और फर्दर उसके ऊपर फिर वो चेक्स आते हैं कि फिर एक उसके साथ एक मैसेज डाइजेस्ट आता है, वो भी डिक्रिप्ट होकर डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। So there are many layers of encryption and security that is used. Still, data can be decrypted by different means. Quantum cryptography is a future technology actually. इसका पर्पस ये है कि आपके पास इतने ज़्यादा एल्गोरिथम्स हो, कोड्स हो कि कोई उसको डिक्रिप्ट न कर सके। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड यूज करती है एन्क्रिप्शन का, यानी आपका प्लेन टेक्स्ट जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड, उसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें आप एटॉमिक फीचर्स यूज करते हैं, ठीक है, फोटोन्स और जो चीज़ें आप यूज करते हैं। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में जो फिजिक्स की ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स, फोटोन्स यूज होते हैं, जिसमें वो लाइट पार्टिकल्स यूज होते हैं। तो देर आर सो मेनी लाइट पार्टिकल्स you can use. It becomes very difficult, almost impossible to decrypt the data without having access to it, okay? Or without knowing the pattern used by quantum cryptography. तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि it is nearly impossible to decrypt the data, right? Secondly, there is a wide range of encryption methods available. इनक्रिप्ट करना भी इजी है और डिक्रिप्ट करना मुश्किल है। Now this is artificial intelligence. Yesterday we discussed about the new topic that has been introduced in your paper 3, which is artificial intelligence. There is a full chapter on this topic, the last one in paper 3. There are different topics associated with artificial intelligence. Let's see how can we connect these different terms to their respective descriptions. First of all, read the descriptions, right? It becomes easier to match them to the terms, to the specific term. A structure used to model relationships between objects. Objects के बीच में relationships होती हैं, okay? इसको हम database की relationships भी होती हैं, inheritance होती है, paper 4 में, और right. A computer system modeled on a brain, right? कंप्यूटर सिस्टम जो ब्रेन को डिपिक्ट करता है, ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन के अंदर जैसे लेयर्स होती हैं, डीप लर्निंग होता है, उसको मशीन लर्निंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट improves its performance at certain tasks with experience, alright, this seems to be machine learning, isn't it? मशीन लर्निंग भी होता है ना कि मशीन को आप डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं, you give so many experiences to the machine, and when machine gets results, similar results for many times, so actually the results are exposed and machine will follow the same pattern that has been successful previously, ठीक है। जैसे आपने मशीन को बताया कि 90% या उससे ज़्यादा जिसकी परसेंटेज है उसका ए स्टार ग्रेड है, दोबारा आपने ये बताया 90% से ज़्यादा, फिर एक बच्चे का रिजल्ट है, आपने कहा 90% ज़्यादा तो उसको ए ग्रेड असाइन करें, फिर एक दफ़ा आपने बताया कि नहीं 85% या उससे अबव हो तो ए ग्रेड हो, ए स्टार ग्रेड होगा। अब मशीन क्या करे, उसको 5 दफ़ा आपने बताया कि 90 या 90 से अबव है ए स्टार है, और एक दफ़ा बताया कि 85 से ज़्यादा ए स्टार है, वो उसको लेगी जो आपने ज़्यादा उसको बताया था 90% का। दिस इज मशीन लर्निंग, it learns from its experience exactly as human beings learn from their experiences. हम अपनी इंटेलिजेंस, अपना आईक्यू इस तरह अच्छा करते हैं कि हम अपने पास्ट में जो हमें एक्सपीरियंस हुए होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ कि अच्छा मैं एक रोड से गुजर रहा था, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, और वो स्पीड ब्रेकर से अच्छा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, I had to slow down my car. Next time when I'll cross the same road,
the thing will come to my mind, स्पीड ब्रेक करा थोड़ा सा स्लो करना, ऑलराइट। थर्ड टाइम मुझे फिर बिल्कुल ही पता लग जाएगा पहले से कि मैंने कहाँ पे स्लो ही चलना है। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। सिमिलरली मशीन लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी आपको बताया ग्रेड्स वाली एग्जांपल, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग के साथ हो गया। एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विद हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो होती है जैसे आपकी लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ये चीज़ें सारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, वो यहाँ पे नहीं है। इस पार्ट ऑफ पेपर 2, कुछ पेपर 3 में भी आता है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कोई टर्म अवेलेबल नहीं है उससे related। A computer method used to find the optimal path between two map locations, जो shortest possible path आपने locations के बीच में find out करना है। What is this about? It's about, this is graph, right? Graph is a method, इसको data structure भी कहते हैं। P4 में ये दोबारा आता है data structure के साथ। Artificial neural networks, computer program that improves its computer system model on a brain, yes, ये brain के साथ होती है, ठीक है। A star algorithm, structure used to model relationships between objects, maybe graph. A computer method used to find the optimal path between two map locations. This is A star. Okay, right? और ग्राफ को हम इसके साथ रिलेट कर लेंगे। That's it. Describe two categories of machine learning. Machine learning is either supervised or unsupervised. Supervised machine learning is when we keep track of machine's exposure and experiences. हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ऐसे कर ले, अब चेंज कर ले, ठीक है। जैसे आपकी चेस गेम्स होती है, एक आप खेल रहे हैं, सामने कंप्यूटर का प्लेयर खेल रहा है, तो एक्चुअली दैट पर्सन इज मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इसके मूव्स के अकॉर्डिंगली उसके डिसीजंस बराबर आते हैं इफ यू आर सुपरवाइजिंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज व्हेन मशीन इज गिवन सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। Machine works on those options and it layer by layer, step by step, it gets the best option that it requires to make the decision. Okay. Question number 5. Now this is directly on artificial intelligence. Let's see. Calculate the shortest distance between the base and each of other towns in a diagram using Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm is a separate method. It's different from A star algorithm. ये दो तरह के graphs होते हैं. Graph actually tells us the method that we can use to find out the optimum path between base and the destination. इनमें डिफरेंस ये है कि A star algorithm किसी specific location का आपको पाथ बताता है। लाइक बेस से लेके आपने, जैसे आपने घर से स्कूल तक जाना, आप रास्ते में कई पॉइंट्स आएंगे, you have to turn right, sometime you have to turn left, sometime you have to go straight, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन एक ही है, स्कूल। तो घर से स्कूल तक जाते हैं, अगर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं आपने घर से स्कूल तक जाना है, आपकी डेस्टिनेशन स्कूल है, इट मींस यू मेक यूज ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम, आपकी एक डेस्टिनेशन। अगर आपसे कहा जाता है कि ऐसे ही आप शाम को निकल जाएं वॉक करने एंड यू जस्ट एक्सप्लोर द पॉइंट्स, द थिंग्स, द लोकेशंस, तो आप देखेंगे डिफरेंट लोकेशंस का आपके घर से कितना डिस्टेंस है, नॉट द सिंगल लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस। देन यू विल मेक यूज ऑफ डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। डाइक्स्ट्रास आपको बाकी सारी लोकेशंस का बताता है, तो एक डेस्टिनेशन ही होती है, आपकी मल्टीपल डेस्टिनेशन होती है। ए स्टार में आपकी सिंगल डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। शो यू वर्किंग एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल प्रोवाइडेड। ओके, हाउ वुड यू रीच योर आंसर? डिस्क्राइब हियर। मेथड आपने क्या यूज किया और यहाँ पे आपने इनके रिस्पेक्टिव जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो लिखना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या, लाइक बेस से टाउन 1 में गए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका कितना रहा, 2 में 3 4 5 6, और ये टोटल 5 मार्क्स, राइट। 3 मार्क्स फॉर दीज shortest distances and 2 marks to write the method for this. Now let's see. फ्रॉम बेस टू टाउन 1, अब आपने हर किसी का बताना है। डाइक्स्ट्रा है ना, अगर ए स्टार होता तो वो आपको कोई एक बताता, लाइक टाउन 5 का करे या सिर्फ टाउन 6 का करे। अब आपने सबका करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम बेस टू टाउन, विच वन इज द शॉर्टेस्ट पाथ? ये
डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है 4 किलोमीटर हो सकता है, 4 मीटर्स हो सकता है, राइट। टाउन 1 जाने का कोई और मेथड? फर्स्ट वी गो टू टाउन 3 एंड देन टाउन 1। इट टेक्स 2 किलोमीटर्स एंड देन 1 किलोमीटर। 3, ये 3 है, ये शॉर्ट है, 3 इज लेस देन 4। डायरेक्ट जाने पे 4 किलोमीटर्स था, ये 3 किलोमीटर्स, सो विल प्रेफर 3। तो आप बताएंगे टाउन 1 का जो रास्ता है उसमें 3 लगेगा। आप देखिए यहाँ पे जब टाउन 1 है, यहाँ पे डिस्टेंस आप लिखेंगे 3 नॉट 4, क्योंकि 3 शॉर्टेस्ट है। यू कैन लुक फॉर इवन शॉर्टर पाथ। 5 3 नो इट्स नॉट। देखते जाएंगे, यहाँ जाएं, इधर इधर, यहाँ से 1 पे जाए, नो 1 का सिर्फ यही शॉर्टेस्ट है मिलेगा। नाउ चेक फॉर टाउन 2। जी टाउन 2 में बेस से टाउन 2 तक 5, डायरेक्ट वाला 5 आपको किलोमीटर्स दे रहे हैं। लुक फॉर एनी लेसर वैल्यू। पहले 2 पे चले जाए, then 1 and then this 2। 2 plus 1 3, 3 plus 1 3 6। यहाँ से आती है जब टाउन 2 पे तो 6 बनता है, डायरेक्ट 5 है तो 5 इज लेस देन 6, तो ये आपका 5 आ जाएगा। टाउन 2 में 5 लिखिए। सिमिलर टाउन 3 4 6 इन सब लिखिए। अब हम जरा टाउन 6 का देखते हैं लास्ट में, बाकी तो आप इसको कर लेंगे। टाउन 6 का करते हैं। Which one seems to be the shortest path? अगर यहाँ से इधर आ जाए, down 3, down 5 and then down 6. How much distance it needs to cover? 2 plus 3, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8। इस पाथ में 8 किलोमीटर है। ओके, यहाँ से देखिए 5 and 8 13, ये ज़्यादा है। 4 7 ये भी ज़्यादा है। अगर हम देखें 4 1 1 and 5, 5 and 4 9 and 11, तो ये भी, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 आपका बचा। ठीक है, तो 6 का आप लिखेंगे 8। अब आपने किया कैसे वर्किंग? आपने वर्किंग सेपरेटली सबके नहीं बतानी कि टाउन 1 को मैंने ऐसे किया, 2 को ऐसे किया, 3 को ऐसे किया। आपने कंबाइंड मेथड बताना, राइट। फॉर एग्जांपल यू विल टेल दैट यू स्टार्टेड विद द बेस and you look for the required town distance. If direct distance was recorded as a bigger number, you can look for any shorter distance. जैसे इसकी एग्जांपल है, ये डायरेक्ट ज्यादा था, ये आपका जो इनडायरेक्ट था वो शॉर्टर था, and we write the shorter path. Actually the shortest distance between base and the required town. ये आपने सारे को फिल किया और यहाँ पे एक्सप्लेन कर, that is 5 marks. Explain the use of graphs to aid artificial intelligence. Now, why graphs are used for artificial intelligence? Graphs are used because actually they give you the maximum options to choose from, and this is a good decision making process. अगर आपके पास ग्राफ नहीं है, फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, आपके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस। ये इसका मेन पर्पस है। Give 2 benefits and 2 drawbacks of packet switching. Now the question changes. अब आप नेटवर्किंग पे आ गए। नेटवर्किंग आपका एक कॉमन टॉपिक है। Packet switching and the other is circuit switching. Packet switching is a method of data transmission in which data is divided into packets, preferably equal size packets, but कुछ different sizes के भी हो सकते हैं। These packets, they actually start moving through different nodes and they have to reach a destination. Packet contains information about IP addresses of the source, IP address of the destination, their ID number, their the other information that include the details about the packets themselves. ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके पैकेट जाता है। तो पैकेट जिस पैकेट को जहां से रास्ता मिलता है नोड से, वहां से ट्रेवल करता है। It tries to reach the destination as soon as possible. When all the packets they are assembled at the destination, an acknowledgement is sent to the sender that all the packets have reached. Okay? This way packets they are used.
हमारी जितनी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिशन होती है, ईमेल सेंडिंग, रिसीविंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ये सारे के सारे पैकेट स्विचिंग्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे पैकेट स्विच होते हैं। Benefit is actually this is a quicker method. Packets don't waste time. उनको जो रास्ता खाली मिलता है वो चले जाते हैं. On the other hand, circuit switching, it actually requires the free path first. When the whole path is free, dedicatedly free, then data is transmitted. तब तक वो ट्रांसमिट ही नहीं होता. ठीक है, पैकेट वेट नहीं करता, वो जल्दी चला जाता है. और secondly, actually it is easier to send data through packets for long distance. क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे आप सर्किट स्विचिंग कर ही नहीं सकते. What are the drawbacks? Drawback one is packets may not reach the destination. Some packets may be lost. ठीक है, अगर 30 पैकेट्स हैं उनमें से 28 पहुंचे, 2 के रास्ते में लगे फ्लक्चुएशन की वजह से या डेटा करप्ट हो गया or for any reason they were removed, they couldn't reach the destination. This is a problem with packets. They are not that secure. It's not that secure, right? Sometimes if clashes are there, second drawback. Sometimes clashes occur between the packets. If two packets have the same frequency, same voltage, they may collide and they'll stop unless we use a technology and we'll actually let them go. तो यहाँ पे थोड़ी सी clashes की problem हो सकती है. इसको collisions भी कहते हैं. Right, have a look at this. I think yesterday we did a question that carried this type of value. Reverse Polish notation is used to carry out evaluation of expressions. Actually, it evaluates expressions from left to right, and it looks for the clear things, the clear data. It doesn't make use of brackets. Data becomes less ambiguous. Identify with reasons data structure that could be. ये हमने अगर पहले भी किया तो आपको याद होगा. RPN जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो स्टैक है. I hope you know the other data structures. Stack, queue, linked list, array. ये डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े. और एक हमने ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है, राइट? तो जो ज़्यादा सूटेबल है वो स्टैक है. उसकी रीज़न क्या है? Stack follows a principle which is known as last in first out or first in last out. तो पहले आपका प्रोसेस, पहले आपने वैल्यू दी है वो सबसे आखिर में प्रोसेस है. और आरपीएन भी यही करते हैं. राइट, द इनफिक्स ये अब टेक्निकल है. इनफिक्स का मतलब है कि ये ब्रैकेट्स के अंदर ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसको आपने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में करना है. पोस्ट फिक्स इज आल्सो कॉल्ड आरपीएन. ये पोस्ट फिक्स है, ये थोड़ी सी लेस अंडरस्टैंडेबल है, राइट? बट एनीवे, आपको इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो बाइनरी ट्री का मेथड यूज होता है. ट्री ट्रेवर्सिंग मेथड. बाइनरी ट्री में आप पहले लेफ्ट नोड लिखते हैं और रीड भी करते हैं, फिर राइट, फिर इसकी रूट, लेफ्ट राइट रूट. और रेयरली इसका डिफरेंट मेथड है. जो आरपीएन में से आपने वापस कन्वर्ट करना है इनफिक्स में, इसके लिए आप स्टैक मेथड यूज करते हैं. इसको आप बुक से और नोट से, पास पेपर, मार्किंग स्कीम से आप देख सकते हैं. इसमें भी आपने ये करना है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन से सिंपल इनफिक्स में कन्वर्ट करना है. बट यहाँ पे वैल्यूज गिवन, आपने वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद उनको वैल्यूएट करके आपने फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है. राइट, दैट्स इट. उसके बाद ये कुछ रिपीट हो रहे हैं. देयर आर सम सिमिलर क्वेश्चंस. So I think it's enough for today. So please practice these questions and learn the concepts, right? And see you with video number 4 inshallah tomorrow. Allah Hafiz.